Yes. ये ये कौन सी स्लाइड है यार? ये Hmm. शायद इसमें अपना वेबिनार में उन्होंने Correct. अच्छा, कैप्चर किया था, चलेगा, ठीक। चलेगा, चलेगा. है ना? Right. सो we'll start with this. I think most of you should have gone through this in the webinar. और एक साइट है यहाँ पे, there is one more site, YouTube पे तुम it's very nicely explained in CS 231. ये जो स्टैनफोर्ड्स के लेक्चर्स है ना, Okay. इसमें जो ये फोर्थ लेक्चर है वो इसी के बारे में है, पूरा backdrop, and I mean she has very well explained here all the अच्छा. chain rule, I mean the back propagation, the forward propagation, right? The same problem has been explained here. Okay. ये जो फेफे के lectures है, this lecture is specifically from Serena Young, uh, but this has both the problems covered, जो webinar में cover किया था. Okay. uh, she has covered it very nicely over here, uh, with all kind of intercases. So if you don't follow here, I mean, you are always welcome to go to this CS231 and fourth lecture. Okay. CS231, right? Okay. Yeah. That's a good reference. Okay. यानी ये सारे प्रॉब्लम्स यही से उठा है, यानी ऑलमोस्ट स्टैनफोर्ड लेक्चर एक से. यार So एक एग्जाम में भी आएगा I क्या? mean, ये पता नहीं. I mean, even the values are same. I mean, they have not Oh, bothered to change the values even further. okay. नहीं, As ये तो the हम lowest of the फर्स्ट problem. सेमेस्टर से ही देखते आ रहे हैं कि सारी स्लाइड्स कहीं ना कहीं मरी हुई हैं। Correct, Right, correct, right. correct. So we'll start with this problem. I've tried to simplify here. I'll delete all these values, but ये जो graph है पूरा will compute all these values. Bipin bhai, you have calculated all those manually or you have used some formula so that we can use? We'll do that now. Okay. We'll do that now. Great. Everything we'll do. Great, great. So ये expression है जो दिया हुआ है, right? And these values are given: x0, w0, x1, w1, or w2. These are the input values, है ना? Okay. Okay, all these green boxes are the forward path ka values in the whole equation. So we'll go through each of the block, what we are doing here. Okay. Right. Okay. We go to the lowest level. I mean, so these are the inputs, right? X1, X2, X0, X1 are the inputs. Correct. W1, W0, W1, W2 are the weights Correct. for this particular problem, right? I- So we'll start from the lowest operation of this whole graph, right? This expression, that is ये addition, basically ये multiplication है. At the Correct. lowest level we can compute, right? Yeah, x0, x1, x0, w0. So that is what this multiplication is. x0 और w0 को इनपुट लेके वो a देगा हमें. Okay. Okay. And Similarly, this x1 and w1 gets multiplied, we get b here. okay, can we quickly see that graph once again, or can we somehow put one side by side so that we can compare and we can recreate? Yes, this is the thing. I'll try. How do I paste it in Excel? Yes, that is. What you can do, you can just take a screenshot in snipping Yeah, this tools. is a screenshot mostly. I mean, No, you can paste it on Excel actually. You can take a screenshot of that with, okay, I you don't, want me to do that? Okay. yeah, just take a screenshot and then it will be smaller version and it will fit. Oh, बाजू में आ जाएगा. Correct. Correct. So insert format cell. Shall I? No, don't do that. Yeah.
open that window, open that window, then take a screenshot. uh, Now shift windows S. Yes, just take a screenshot. ये Ubuntu है. So Okay, let me see. okay, okay. Hmm. Yeah, that's fine either way. If you can copy, Yes. not share. And then this is or screenshot, screencast. Okay, or in the chat box. it's Yeah. Now, taking. if you go to Excel, I think you will be able to paste. Just Control V, or yeah. Yeah, आ Now गया. make it smaller and then put it on the side. Sure. Yeah. Someone is recording. होना है क्या चंदन भाई? Yes, I am trying to record. Recording तो चल रहा है शायद. हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो जरूरी है. ये तो fuel है. ये देखो कौन बोला. भाई आप लोग का रिकॉर्डिंग अभी सुबह से वही 2 दिन से चल रहा है मेरा. और छोटा कर दूं क्या? हाँ, और भी छोटा. जस्ट वो व्यू तो Right. दिख रहा है. जस्ट वो जो बाजू में जो जगह है ना आपका सेल ए हाँ. में आप just उस जगह पे लगा दीजिए और साथ में पूरा आ जाएगा साइड में आपका जो. या हाँ, और भी छोटा होने से ठीक रहेगा. और भी कोई छोटा दिक्कत कर नहीं सकते. होगा. Correct, correct. It's that intuition so that we can map this link. That's it. दिख रहा है आपको सबको? हाँ. हाँ, ठीक है. एटलीस्ट एक व्यू है कि हाँ 1 2 3 4 5 टोटल इनपुट लाइंस है. Correct. I mean, is the screen visible to all? Yes, yes, अभी yes, zoom yes. out करना है और कुछ. हाँ हाँ. Okay. So this is the function, and then we are starting from the lowest operation, that is your mul. Similarly यहाँ पे ये है, right? And these are the values, uh, -1 and 2, right? -1 and 2 here, and this is where we compute -1 and 2. इसका value we compute from these two guys, right? विपिन भाई एक बार बता दो ना ग्राफ उसका. वो तो 2 -1 -3 -2 ये है, तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? सेम है ना? ये W0 नीचे चला गया, X0 ऊपर चला गया है मेरे वाले में. X0 W0, right? Right. X1 W1. माइनस. ओके, हाँ. वैसे से. और ठीक है, ठीक. W2 मैंने ये साइड पे रख दिया यहाँ पे नीचे. Okay. Okay. W2 है ना, -3. So right now we are doing this multiplication. We did get an answer as -2, right? So I'll write it here, manually feed it. यहाँ पे I have a first question. Yes. When Yes. we are constructing this graph, okay, when we are constructing this graph, then if you see the W2, we are connecting. Why we are not connecting at the initial summing point? Where We can do that. We can do that. we can Not do a that, problem. correct? I mean, Right. yes, Right. yes. I mean, so यहाँ पे यानी तुम W0 X0 के साथ W2 ऐड कर सकते हो या Correct. फिर I mean W addition is a commutative, right? I mean Correct. कोई भी Correct. order में कर लो Correct. तो problem नहीं है. Correct. But correct. I mean it has to go after multiplication of W0 W1 के साथ तुम W2 directly add कर सकते हो. Correct. उसके बाद W2 W1 W1 X1 ऐड कर सकते हो यानी मल्टीप्लाई करने के बाद. Correct. So Correct. that order is I mean all commutative. So you Right. Right. Acha. you can change that order. Acha, Bipin bhai, just give me 1 minute.
गिव मी 1 मिनट हाँ फॉर फ्यू पीपल. हृदय भाई, मैं आपको एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम हाँ जी ऐसा है सर, हाँ कि वी हैव एन इक्वेशन एकदम शुरू में जो दिया हुआ है. ओके, हाँ हाँ सो दैट इज फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस w0 x0 w1 x1 प्लस w2. करेक्ट. नाउ हम्म, हमें ये इक्वेशन को पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा. ठीक है. राइट. आप ग्राफ फॉरवर्ड ग्राफ बनाना. फॉरवर्ड ग्राफ बनाना है. उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेट करेंगे और बैकवर्ड दोनों ही कैलकुलेट करेंगे. तो एग्जैक्टली. जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे पहले काम करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है. तो इक्वेशन को अगर देखेंगे तो राइट साइड से नॉर्मली फॉलो करो, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से. सिंप्लीफिकेशन हमारा नहीं, गोल. I mean go to the lowest operation which can be करेक्ट. performed independently and एब्सोल्युटली start from there. करेक्ट. तो Uh, सबसे. I mean, यस यस यस. so understand what are the inputs. Inputs are your x1, x2, and w0, w1, w2. So from there you can start the graph actually. राइट. तो यहाँ पे हम लोग अगर राइट सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखेंगे, सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो w0 x0 मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वन, w1 x1 मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर टू ब्लॉक, एंड w2 ऐड हो रहा है. तो दैट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड ब्लॉक. तो इसीलिए हम लोग फास्ट वहां से स्टार्ट करेंगे. दैट इज वन वे ऑफ राइट रिप्रेजेंटेशन. दैट इज वन वे ऑफ राइट रिप्रेजेंटेशन. राइट. इसका हाँ हाँ दूसरा वे समझा भी है. समझा. जैसे आप I समझ. mean, you can relate to your C program, right? I mean, the करेक्ट order of preferences of execution in the करेक्ट करेक्ट C expressions, right? करेक्ट. It's the same way. सेम वे. So uh, so order of expressions वही follow करेंगे जो C में करते हैं. I mean, करेक्ट. it's straightforward then. राइट. अच्छा, और एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्यूशन कैसा है कि आप इनपुट से शुरू करेंगे. इनपुट क्या है? w0 x0 w1 x1 एंड w2. दीज आर द इनपुट्स. 5 इनपुट्स है आपके पास. ओके. तो इनपुट्स को आपको लेफ्ट साइड में इनपुट डाल दो पहले. उसके बाद ऑपरेशन को देखो क्या क्या ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करना पड़ेगा टू अचीव दिस फंक्शन. तो पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 3, उसके बाद एडिशन है. 3 ब्लॉक का एडिशन होगा. ठीक है, क्लियर हो गया ना? नाउ वी कैन हाँ हाँ क्लियर गो है. फॉरवर्ड. यस यस विपिन भाई. So again, this A and B we have calculated. Now we add this two to get your C value, right? That is what I've done here, right? -2 और -6 को add किया, 4 आ गया. So I'm just feeding this to make the presentation clear. That is 4, right? I'll delete these values for now. We'll calculate all of this later. Uh, That is for backpropagation, right? That you are deleting. हाँ, बैक प्रोपोगेशन वो बाद में हाँ करेंगे हम लोग, बाद जब में. हाँ समझ गया. पीछे से आएंगे हाँ तभी. अच्छा, सही है. Forward propagation is just to follow those operations one Yes, after yes, another. yes. I mean, Yes. those it's straightforward forward operation. Just linear operation एक के बाद एक साथ में Exactly. एक्सपोनेंशियल एकदम एंड में आता है, या जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे करेक्ट Right, right. करेक्ट. So वो now, बीच में नहीं आता yeah, go ahead, go ahead. है ना. मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा जो जो नेटवर्क है, अगर थोड़ा सा आप अगर लेफ्ट में जाएंगे स्क्रीन को, मैं जस्ट वो हाँ ये जो व्यू है यहाँ पे पहले है 2 स्टार, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? करेक्ट. Yes, Then we are multiplying adding. these two values, x0, Yes. w0, w1, x1. करेक्ट. Then Multiplication. Then I mean those are multiplied. Those values get added. That is yes. this expression, this part of the expression. Yeah. Uh, this addition gets completed. This part of the expression gets completed. Then w2 gets added. So this part W2 will gets get added. Yes. हाँ. then उसके बाद this part will exponential. get completed,
and then माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, यस, देन उसके बाद एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं, हाँ Correct. उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, करेक्ट, उसके बाद +1, उसके plus. बाद ये एडिशन हो जाएगा, करेक्ट, +1, उसके बाद 1/x, उसके बाद उसके डिवाइडेड बाद बाय 1/x, यस Correct. 1/x, फाइनली ये पूरा ट्री बन गया. हाँ पूरा So ट्री बन जाएगा this is फॉरवर्ड के लिए. this is the crux of this whole problem statement. Clear. If we can't Okay. if we can't convert this network, then we cannot solve the problem. So this is the crux. And if anyone can try this level, he will get at least 25% marks. Just for reference, okay? I'm just joking. नहीं आधा आधा मार्क्स मिलेगा ना, आई मीन Correct. दे आर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पूछे तो आधा मार्क तो मिलना चाहिए, आई मीन डेफिनेटली. of 50% mark. Right. So now this is again addition. Since this is the add operator, we are adding this two value, हाँ. this two green boxes, right? हाँ, हाँ. And we then get D. So D का value होगा 1, right? And then this is multiplication operation. Again, I mean the whole graph is as per what we discussed just now, right? Addition होने के बाद ये multiply by -1 हो जाता है, तीनों weights का addition होने के बाद, and multiply add होने के बाद, dot product होने के बाद, and then basically there is a -1 multiplied, right, at the top. ये एक्सपोनेंशियल लेने से पहले उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है. That is what we are doing here, right? Okay. And then we take an exponential here. So this is exp of this value. Okay. Okay. And ये समझ में आ रहा है, ये I think- फॉरवर्ड फर्स्ट हाँ. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. I think ये जो इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं ना, we can at the graph itself we can visualize and we can see at the steps because it is already written on the graph itself. So yes. we So can. यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि बैकवर्ड में इजी हो जाएगा. I understand. हाँ, Absolutely understand. हाँ हाँ हाँ. है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कर लेंगे पहले एक बार. So ये e का वैल्यू हमें 1 मिल गया है, -1. f का वैल्यू है 0.3. e to power -1 ना. हाँ, e to the power of -1 0.37 है ना. वो जो ऊपर एक्चुअली हाँ, लिखा है 0.36, हाँ 0.367. 0.3678 यानी 0.37 ही ले लेते हैं, Correct. No issue. है ना. इसका है 1 + 0.37. This 1.37. So this is this plus this. And this is 1/x, that is 1 divided by this 0.73, right? And this is what we get as the last node ka output h. Correct. Okay. Now this is all your forward pass. Any question, any doubt? किसी के पास है? कोई डाउट है? फॉरवर्ड क्लियर हो गया, 50% मार्क्स आपको मिल गया. आप बताइए कोई डाउट है? तो अगर हमको बोले कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन इनका फाइनल आंसर क्या है, तो अपने को 0.73 बताना. हाँ, करेक्ट. H is equal to point. ये देखिए, This. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लू कलर में लिखा भी हुआ है, तो आप मनी मन कैलकुलेट कर भी सकते हैं. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो ब्लू कलर में इंडिकेट किया हुआ है. तो फर्स्ट हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप हमें फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन हर एक स्टेप में जो जाएगा.
ठीक है, क्लियर सबका? Right. Okay. Then now let's start the back propagation part, right? So Yes. back propagation में ये जो red boxes है वो fill करते जाने हैं हमें, Correct. right? So delta H, since there is no error function given in this case, we assume the maximum, that is 1 as dh Okay. at the output. Okay, and we start the back propagation from here. तो ये क्या Now for every situation it will be 1 if no output is no given. error function is given. Yes, Okay. no reference data is given to you. Okay. Okay. है ना? तो उसमें तुम 1 assume करो और चलो, I mean Right. the maximum dh delta, Okay. that is 0 or 1 is the value generally we get for all kind of भाई network. उसमें तो अपन DH by DG कराती थी ना मैम कुछ क्लास में, DH by DG, DG by DF, वो हाँ हाँ कराती वो वो करेंगे वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। वो बाद में आएगा, but इनिशियल we will do that. थी। इनिशियल ये पॉइंट को DH DG ये वाले क्या है? ये How are है these तुम्हारा different from वो delta वाले? this is the delta that will propagate back after the forward pass. लॉस है क्या हाँ ये? लॉस है लॉस अच्छा, तो एसेंशियली हमारा डिजायर्ड, हमारा जो टारगेट होना चाहिए माइनस जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो है। नहीं, so this is our output and basically जब तुम्हारा लॉस फंक्शन होता था, we don't know what is the loss in this case because there is no data given अच्छा, for this टारगेट ही problem. नहीं दिया जाएगा अपने को। हाँ, तो मैक्सिमम लॉस ले लिए हम, that is 1, delta ठीक is है 1, है ना? ठीक है, और And अगर अपने को we'll टारगेट दिया होगा तो हम हाँ टारगेट माइनस then we have to Consider. basically we have to draw the forward pass for that particular loss function also. I mean यहाँ पे अगर तुम्हारा और एक ब्लॉक बन जाता लॉस फंक्शन का, लेट्स से डिफरेंस का, मतलब टारगेट माइनस आउटपुट ना, मतलब अगर हाँ 5 दे हाँ रखा होता कि 5 टारगेट है आपका, हाँ, तो Correct. यहाँ पे 5 माइनस, और एक ब्लॉक बन जाता यहाँ पे लेट्स से डिफ करके, हाँ राइट, करेक्ट। या नेगेशन, और इसके इनपुट में और एक यानी एक ग्रीन ब्लॉक बन जाता है यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल, यहाँ पे इसको फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से सिर्फ बेसिकली डिफ लेते हैं हम लोग लॉस फंक्शन, तो ये नेगेटिव और यहाँ पे इनपुट हो जाता है इसके लिए, लेट्स से तुम्हारा रेफरेंस डेटा होता है यहाँ पे कुछ लेट्स से 2.5 या जो भी है, राइट, रेफरेंस वैल्यू, ओके। तो उसका बेसिकली डिफरेंस आके यहाँ से फिर पीछे जा सकते थे हम लोग, राइट राइट। ठीक तो है, समझ गया। इंस्टेड ऑफ 1 वो होता 2.5 माइनस 0.3। हाँ हाँ, 0.73, तो करेक्ट। हाँ हाँ राइट करेक्ट राइट करेक्ट, राइट, 2.73 यस करेक्ट यस 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 यस। करेक्ट करेक्ट। एक और सवाल, अगर यहाँ पे आपने को आउटपुट नहीं दिए थे इसलिए आपने 1 लिया, मान लो कि h का वैल्यू 0.23 आया होता अपने को, h is 0.23, तो आप क्या हाँ, आउटपुट 0 लेते कि 1 ही लेते हैं? 1 ही लेते, I mean because there is no we have to just assume that we are taking I mean you Maximum can loss. use any value rather, Okay. right, Okay. but I mean फेफे ने 1 लिया है तो सभी ने 1 ले लिया, उसने भी यानी जो ये जो ग्राफ है स्लाइड्स से निकाला हुआ, इधर भी 1 ही लिया है इन्होंने। ओके ओके। हाँ, तो एक ऑप्शन होता था 0 भी हो सकता था, करेक्ट? फेफे ने 1 लिया है तो सभी ने वही चिपका दिया है।
Okay, There is no explanation. okay, okay. है ना? अच्छा, या मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, जस्ट आई एम एडिंग वन लाइन हियर फॉर बेसिक Okay. इंट्यूशन. So she, what is our whole problem statement? The problem statement, we have a forward propagation and backward propagation. Let us understand the meaning of forward propagation and backward propagation. We have certain input and we have a function. Now, following that function, we are giving that input and we will be getting some output following the function. Correct? But now, the actual desired output may not be the same. That is the whole intuition. Now, it will not same in the real scenario, it will never be same. And then now what we need to calculate, we need to calculate the error. To find out the error, we will use those objective function, loss function we shall be using. And now Right. from the output, we shall back propagate towards the input to change those weight values. If there are bias also, we can consider bias values also. So that for the same input, we can have most nearest same kind of desired output such that our error can be minimized. ठीक है, तो intuition is Uh, clear, right? Intuition is clear. Just a small correction. Yes. Uh, so when you backpropagate, you don't differentiate anything. I mean, you don't have a difference of what that value is. I mean, every expression, every input to an particular operator, right, Okay. has a I mean error calculated for itself. Okay. So every input, uh, it might be your bias, it might be your weight, it might be your actual input, right? Okay. So all So all 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 the inputs to the operators, they will get your updated deltas, value. Updated value. right? Deltas, you can say. So Uh, here you mean to say not only weight and bias, but the input also will be updated. Delta, there will be delta exactly. input. There is a Okay. delta, and that input has to be propagated back. Right. Okay. So when Okay. the input In will be in in, propagating in back. this case, in this Huh? case, n- let's say this is your bias. One Mm-hmm. is your bias. One Okay. add करते हो ना Haha. expression में. Right. Let's assume that is a bias. Mm-hmm. इसमें भी delta आ जाएगा तुम्हें. Now correct. अगर तुम्हें change करना है, I mean, if that is one of the parameters, Mm-hmm. in this case it is a constant. Mm-hmm. But if it was a parameter, then that parameter can also be updated. Okay. 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 Okay, in the Fine. expression. I Yeah. mean, So you can only learn thing, that parameter. yeah, In this only case, it thing. is plus one. Mhm. Sorry, go ahead. Go ahead, go ahead. Uh, मैं क्या बोल रहा हूँ, only thing it updates whatever back propagation we do, it updates only weights and bias. I No, I mean I mean back propagation in fundamental, uh, it propagates the error from one operator to the other operator in a sequential or chain form, Mhm. right? And how does the error flow from output to the input via the connection, that is this Yes, inputs operation. operations, right? I mean, inputs to the operations, right? I mean, so Yeah, for but this initial operator, input. I mean this operator and this operator, the error flows to this guy. Yes, 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 yes. Okay. The input, but For input does not change, right? Initial input. That is my question. initial input, that is what we are trying to calculate the delta x0 also. X0 is your input, Right. w0 is your weight. X0, I don't think X0 Now, ever changed because that's my input, right? that No, is no, If also no, you, my no, question. That is also my question. समन Now, भाई एक बार no, no, no. विपिन भाई को बैक हाँ, प्रोपगेशन करने देते हैं, करने उसका देते एक हैं. बार हाँ, समझ जाते हैं वो yes, Correct. क्या yes, yes, Correct. करता है. yes. Correct. I don't. Correct. Yes, Correct. let's go. No, these are Go. very good questions, guys. I Yes. think we should understand that. That is the So whole motive. That is the whole motive. exactly, exactly. क्योंकि So तभी so so जब पूरा बैक प्रोपगेशन होगा तभी शायद अपने को समझ में आएगा कि वो इनपुट को क्यों So चेंज let's कर रहा है. start from back propagation. Bipin, I think you can start from the back propagation. We should not jump into Right. Right. the. okay, okay. Fine. Yes. Fine. Fine.
we are jumping So, and so, so confusing understand things. this that every input to a particular operation uh, might be a binary. It might be a binary operator or a tertiary operator or more than three inputs, right? Every Right. input will generate an error Yeah. for a particular operator. Okay. Okay. Understand that part. I Correct. mean, Okay. every input has a delta which will come up in the back Correct. propagation. Correct. You have to decide. I mean, you have to use that delta to update that particular parameter if it is a parameter, or yeah, if it is an input, actual input which is getting propagated, you have to back propagate it to the next the previous operator, Correct. that delta. So Correct. that depends on how the equation or the use case. Yes. But every input, uh, it might be an actual input, it might be a parameter, it might be a constant, Correct. it might be any tensor for that reason, right? I mean, any type of a tensor, any data type, it will generate a delta from the back propagation Correct. to that particular operator. That's the fundamental. Now let's start with this, right? We have delta h here, and we go to the last operator, that is 1 by x. 1 by x ka, let's say h is a function, right? H is equal to 1 by g in this case, right? Hmm. Now, uh, h, I'll say h dash, or It, how do I say? you mean to say dh by dg? I mean to say. Yes, Okay. yes, dh Okay. by dg, Okay. Okay. राइट dg का आंसर क्या आएगा तुम्हारा? h dash, I'll say, yeah. Yes. Minus 1 by minus x 1 by square. g square. Correct. Yes, Minus 1 by g square. minus 1 divided by g into g, Correct. right? Right. So when we calculate this delta g, you have to remember, uh, always delta or dg is equal to, yeah, dg is equal to dh multiplied by h dash. ओके, ऐसे ही DH पूरा और चेंज चलेगा. DH और H dash में क्या अंतर है? H dash is also DH by D, D, DG. नहीं, dh is your delta value which is getting propagated from the previous node. Okay, okay, okay. This is not the differentiation का D. No, no. Okay, okay, No, no. यहाँ पे D, देखो. D is your delta, delta h. See. okay, I okay. mean your delta from the previous node. See. I mean the error which is getting propagated from the previous node. Right, right. So basically, we need to understand there are two things. One is first we are calculating the slope. The slope is h dash, that is h prime. यहाँ पे लिखा हुआ है जो. That is the Okay. slope, and we are multiplying slope with the actual change value dh, so that we are actually measuring dg, and we are getting actual change in error with reference of original value. So d, Exactly, right. So, exactly, so ये exactly. multiplication देख लो, it says cross multiplication. It is nothing rocket science. It is simple cross multiplication we are doing. Right, We are right, measuring right. dg. Okay. Now let's calculate from this formula that we have written here. Sorry, here. Calculate the dg value, right? So Right. this is equal to तुम्हारा g का वैल्यू ये है, right? d dh का वैल्यू ये है यहाँ पे, right?
So I have taken dh Yes. multiplied by uh, uh, ये है divide by uh, Uh, multiplied by -1 divided by this is your g value correct. 1.37. Correct. 1.3 into 1.37. Yes, correct. Oh, bracket. You have to put the bracket, I think. Yeah. Yes. Oh, 15. और वापस एक बार है ना. So this will give you delta gh delta Delta g, G. right? Delta G. So this is 0.53 negative. Okay, right. भाई इसने तो दिमाग ये खराब कर होगा दिया. पहला हमारा आई मीन फर्स्ट बेसिकली error with respect to your input g calculate. शगुन भाई. सॉरी हाँ, एक बार आप समझा दो, ये dg इज इक्वल टू dh इंटू h स्टार क्यों हुआ? Multiplied by वो कैसे आया? डिफरेंशिएशन h डैश समझ में आया, और dg ऐसे क्यों लिखा है हमने? I mean that's the basic तो formula you can say. I mean to propagate the मतलब वो यही है ना कि एच डैश को अगर आप सागर भाई उसको रिकॉल करो तो एच डैश जो है वो स्लोप लेता है. स्लोप क्या करेक्ट, होता है आपका? डेल वाई बाय डेल एक्स. करेक्ट, इस केस में आपका डेल एक्स जो है वो डीजी है, करेक्ट, डेल वाई आपका डी एच है. तो बराबर, अब क्योंकि स्लोप एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो यस, उसको आप हाँ, रीअरेंज कर सकते हो ना, आपका डीजी और डीएच को आप रीअरेंज कर सकते हो ना. हाँ, तो वही किया है कि एच डैश इक्वल टू डी जी बाई डी एच जो हम लिखते थे, उसमें से जो हमारा डिनोमिनेटर डी एच होता था उसको हम एच डैश से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. h डैश इज इक्वल टू dh by dg, नहीं, ओके, नहीं देखो हर बार तुम्हारा जो एयर प्रोपोगेट होगा सेम फॉर्मूला आएगा. अभी इस केस में df इज इक्वल टू अरे आई नहीं, मीन हाँ अरे सही बात है, सही बात है, सागर भाई सही पॉइंट पकड़ रहे सागर भाई, हैं यहाँ ये. पे मैं एक इंट्यूशन देता हूँ. आप देख लो, डी वाई हमें निकलना है. डी वाई. ओके. अब ये टारगेट पकड़ लो. देखो आप एच एक सेकंड, आप खाली बोलने के टाइम डेल्टा या डिफरेंशिएशन, और डी बोलोगे तो मुझे दोनों में कंफ्यूज हो रहा है, डेल्टा बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन? डेल्टा डेल्टा डेल्टा. DNN. हमें डेल्टा वाई ओके, निकलना है. डेल्टा वाई निकलना है. अब डेल्टा ओके, वाई निकलने के लिए हमें दो स्टेप किए. पहले हम लोग किए एच प्राइम. यहाँ पे क्या है? एच प्राइम ये है डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. करेक्ट. स्लोप निकल गया आ गया. ठीक है. करेक्ट, अब स्लोप के साथ हम लोग डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा ओके, डेल्टा वाई. डेल्टा वाई. ओके, ठीक है. मैच ओके, हो रहा है. इक्वेशन मैच हो रहा है ना? ओके, दैट इज हाँ, मल्टीपल. ये आपके क्या है, चेन रूल है ना, जो जो चेन रूल आता है, बस वही हो रहा है. ओके, ओके, हाँ वही है. बैक बैक प्रोपगेशन में चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट टू प्रीवियस स्टेप ओनली. नहीं, ओनली मेरे ओनली को वन सागर स्टेप भाई का एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब हम एच का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, करेक्ट. तो हाँ, वो बनेगा डी एच बाई डी जी. तो Yes. एच डैश शुड बी इक्वल टू डी एच बाई डी जी, Yes. यू आर है ना. राइट. Yes. राइट राइट. राइट राइट. dh by तो dg. So वो dh डी is जी equal. इक्वल टू डी एच इंटू एच डैश नहीं होगा. करेक्ट. dh is equal to ये dg into डीजी h dash. पकड़ लो, इसको डीजी पकड़ लो फिर, यानी हाँ अगर हाँ वो हाँ हिसाब से जा रहे हो हाँ. तो इसको ये डीजी पकड़ लो. और पीछे जाके चेंज हो जाएगा आई फिर से मीन ना. इसको dh. मेरे को अब जाके समझ में आया सागर भाई कहना क्या चाह रहे हैं. ये सागर भाई ना बोलते छोटा है, ये भाई बात मोटी करता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. राइट. नहीं, यही अच्छा है एक्चुअली. इंटरेक्टिव होगा तो तभी क्लियर होता है. हाँ बहुत क्लियर अच्छा, होता है. बहुत कुछ, करेक्ट. बहुत कुछ. अगर जो डिलीवर भी कर रहा है सेशन, उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी अच्छा ही है. करेक्ट. मैं तो अभी ऐसे ही मान के चल रहा हूँ कि जो भी अपना डेल्टा है उसको उसके डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करके पीछे भेजना है बस. एग्जैक्टली. ओके, ओके, थैंक यू. ओके.
So एक स्टेप करके ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा. राइट, अभी ये है इसको पकड़ लो आप, एफ एफ F1 है ना. इसका वैल्यू है G इज इक्वल टू F प्लस F1. अभी इसको you can differentiate with respect to df. Okay. You can differentiate with respect to F1. f1. Okay. Right. So जो इनपुट है उसके साथ यानी अगर f का तुम्हें df कैलकुलेट करना है तो df dg by df यूज कर लो. अगर विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट करना है तो dg by df1 we have to use. I mean to calculate the df1 here. Right. इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम. Okay. I mean, in this case, it is a constant, so they are not asking to. I mean, this is not a parameter. It's a just a single value that is constant. So we might ignore to calculate this df one. So let's concentrate on df in this case, right? So similarly, this value is यहाँ पे calculate कर लिया. Okay. So इसको अगर differentiate करोगे, this value is just 1. Even this value is just 1. बिपिन भाई, just one quick question. Okay. ये जो आप क्वेश्चन उठाए, ये असाइन कौन से में वेबिनार में किया था या कोई वेबिनार में किया था, वेबिनार में. ओके ओके, ठीक है, ओके. आप सभी सेम 2 से ही हो ना? हाँ, करेक्ट. सेमेस्टर 2 AIML. हाँ, ऑल यस. हाँ हाँ हाँ, पूरा ऑल हम लोग सेमेस्टर 2 में हैं. All your backbenchers. Yeah, me too. Correct. Okay. So ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना? 1 क्यों है? Correct. So यहाँ पे basically these particular step, there are two inputs, f and f1. So that is, and it is a pure summation. So that's why we reconstructed the function g is equal to f plus f1. And as we understood early, the error will impact equally to all the nodes, all the elements, all the inputs. So that is the reason we are taking dg by df as well as dg by df1. And eventually Right. both will get 1. Okay. Right. Now use this value in this equation here. You will get df. So dg is here into the differentiation value is 1. I mean dg by df is 1. So this will become again 3. समझ में आ गया? Even this will be for that reason. Any doubts, guys?
No, it seems नहीं ये तो it एक के seems बाद एक जा रहा है. so हाँ. it seems fine because it is one. I am worried if Right, it is right. not one, then how could be the thing? Yes. Right. कौन सा वाला वन? आई मीन इफ इट इज नॉट, आई The मीन D, एडिशन के केस में हमेशा जो DG/DF है correct, वो वन correct. ही आएगा No, no, हमेशा. that is correct. That is correct. That is correct. No, actually, it is मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में correct, इट इज लिटिल डिफरेंट. correct, correct. It exchange the values, but addition के केस में always it is DG/DF will be always one Hmm. for both the inputs, है ना? Let's go ahead, guys. Okay. हाँ. Now, similarly, F is equal to E to the power E, correct? EXP of E, E, correct. right? इसको कैपिटल में लिखते हैं. हाँ. So तो F just dash. इधर एक step based on what so far we have learned. So first thing what we will do, we will do the derivative of f, right? Right. Derivative of G. Derivative of F with respect to G. Derivative of f with Ah. respect to g. Sorry, Reverse, F with reverse. respect to E. Yeah, F with With respect to E. with respect to e. Yes, yes, yes. Right, right. Uh-huh. With So respect to that, e, Correct, correct. that and will be then EXP. we will put the e value from the previous one. No, we'll put the हाँ, F value from the previous one. Oh, sorry. नहीं 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 नहीं, F dash calculate करने के लिए we use the E value. No, E we'll value. use the E function. We'll use the E No, no, function. no. So Okay. so this is a function. Correct, देखो, F ये है expression. correct, F का expression ये है. correct. F dash का expression it comes to be E s to x का differential लोगे तो E s to x ex. Yes. Correct. E आएगा ना. So I mean F dash is equal to exp of E. Now just E का वैल्यू ले लो. E का वैल्यू क्या है? -1 यहाँ पे. And substitute that in this expression. Okay. Okay. हाँ, ये previous ग्रीन बॉक्स से हमेशा वैल्यू उठाना है, हम्म यानी एक्सप्रेशंस में डालने के लिए. फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी. आई मीन ऑलवेज पिक इट फ्रॉम द ग्रीन बॉक्सेस. Okay. Okay. Now, so this is clear, right? कैसे लिया? And then your DF, DE No, is again the same formula. E value यहाँ से calculate कैसे करेंगे? Okay, DE. Correct, correct. Go ahead, go ahead, go ahead. You are going. Yes. DE is equal to DF. Yeah, sorry, छोटा D होना चाहिए. ये अपने आप चेंज हो गया क्या? शायद ये आपका ऑटो. अब अगर पेन एंड पेपर में करते तो शायद इससे जल्दी आपका हो जाता. हाँ, लेकिन ये कैलकुलेशंस यहाँ पे इजी हो जाता है ना करने के लिए. वो हाँ. कैलकुलेट कैसे करना पड़ता. वो टाइम हो गया सब कहते हुए. एक्सेल वाले बन गया. Correct. हाँ. DF into F prime. तुम्हारा F prime. Right. Now let's calculate the value here. DF है ये वाला into F prime है EXP of E, ये होगा -1 है ना. ओके, तो ये ऑलमोस्ट
0.2 हो जाएगा. ठीक है. Correct. This is all understood, guys? Yes, correct. हाँ, ये एक चीज है, मैं देख रहा हूँ वो जो वेबिनार का सेशन था उसमें ये मुझे मिल नहीं रहा है. तो आप अगर एक ये होने के बाद आप अगर वो थोड़ा हाँ हाँ, शेयर कीजिए तो अच्छा रहेगा. वीडियो है ना उसका, मैं वही देख रहा था आज. नहीं नहीं, वीडियो नहीं, आपका अब तो कुछ डॉक्यूमेंट वो वेबिनार मैंने फाइल. स्क्रीनशॉट लिया वहाँ से. अच्छा 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 वीडियो अच्छा, से. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, Okay. मैं उधर से देख लूंगा, ठीक है. ये तो हाँ, ये एक के बाद एक वैसे ही चलता रहेगा, जस्ट वो एक्सप्रेशन चेंज होता जाएगा. हाँ, but इधर I mean it's एक्सपोनेंशियल. important. ये multiply तक जाते हैं, ये वाला हाँ, करते हैं, and then we can stop. I mean, if you guys want, Okay, go ahead. then it has to propagate all the way to all these values. You have to fill it out, all these red boxes. Okay, let us go ahead. Let's complete हाँ it. हाँ हाँ. ये गलत ले लिया. Okay. Now, in this case, D is equal, sorry, E is equal to D plus D1, right? So F dash D by D E by D D is equal to, 1. ये multiplication है. Multiplication हो गया, correct. अच्छा अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है. हाँ. तो ये हो गया D1. D D ये हो गया D. So values exchange हो जाएंगे इसमें. So in order to calculate this DD delta D, we need DE by D1. It is different. DE multiplied by D prime. This is D prime हमारे लिए. Yeah, yeah. Just taking the previous step. Yeah, that makes sense. So now if we go and substitute that thing, तो पहले हमें DH लेना है, DE लेना है, that is this value, multiply by D1. D1 is this one. Right, guys? Any doubts?
D1 D1 is -1. हाँ ये कांस्टेंट था, -1 से मल्टीप्लाई किया ना पूरा सम को। हाँ ठीक है। ये पूरा सम जो है, सॉरी, ये पूरा सम जो है -1 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ तक, वही है। हाँ Okay. Similarly, you can calculate a red box here. I mean, if it is required in your problem case. But I mean, this is a constant -1. If it was a parameter, you would have calculate the error for that parameter also. But we are not calculating for now. Okay. यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ सिमिलरली ये यानी प्लस है, वो ऑपरेशन के लिए I mean we already did the delta is always equal to d1, right? ये दोनों साइड पे d1 हो जाएगा। ओके, सो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, भाइयों मेरी सॉरी मेरी मेरा मीटर डाउन हो रहा है। गुड नाइट। ठीक है सगुन भाई। सेवन गया, गुड नाइट। So this is dd multiplied by 1, right? D dash is 1 in case of positive, I mean plus, right? I mean plus operator, addition operator, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। एक के बाद दो प्लस, इसके बाद भी और एक है। हाँ, सो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, राइट? इट विल प्रोपोगेट एंड देन मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन है हमने यहाँ पे किया, राइट? वैसे ही करना है यहाँ पे। हाँ यस, ओके। हाँ ये ठीक है, मेरा तो ठीक है। सागर भाई ठीक है, हम लोग एक बार लास्ट स्टेप में आ जा सकते हैं। अगर वैल्यू को व्हाट यू कैन डू बिपिन भाई, यू कैन राइट द वैल्यूज एंड यू कैन सी द लास्ट स्टेप। सो जस्ट व्हाट ये इज द पूरे फाइनल, वाले फिल करना है। हाँ जस्ट थोड़ा सा यू कैन dx0 एंड हाँ हाँ, dx3w1 ठीक जस्ट वन, है ठीक है। राइट। सो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, और हाँ you can put the values directly, you can from some reference, if you have references if you already have references you can directly put value dA and dB कर लेते हैं ना, एंड अच्छा देन अच्छा, okay 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 इट्स जस्ट दिस वैल्यू, राइट? okay ये पॉजिटिव यानी प्लस वाला ये है सब केस, इज इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट? इसका भी ये हैगा सेम, राइट? right right सो ये और ये सेम है, क्योंकि पॉजिटिव इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटर,
addition operator is a distributor of the delta. Okay. Right. Right. So distribute हो जाता है, propagate हो जाता है equally दोनों में. So यहाँ तक आ गए, अभी multiplication के लिए आना है. अच्छा, यहाँ पे दोनों में इक्वली प्रोपागेट हो जाएगा इन ऑल द केसेस, और इट इज बेस्ड ऑन certain weightage or something. Always it will be equally distributed. I mean plus operator के लिए yes, always ये equation आएगा ना 1. अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, देख लेते हैं लेकिन जल्दी से. So now this is coming from DA, this guy. Yes. Right. Yes. So DA और इसका डेरिवेटिव है, आई मीन एक्सचेंज हो जाता है ना, हमने ये देखा था मल्टीप्लिकेशन के केस में. इसके लिए डी बाई डी के लिए D1 आता है, और डी बाई D1 के लिए D आता है. सो वैल्यूज एक्सचेंज हो जाते हैं. सो मल्टीप्लाइड बाय x0 हो जाएगा ये, सॉरी x1, सॉरी W W0 हो जाएगा ये. W0. चेंज क्यों करता है? राइट. सो इसका वैल्यू लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू DA यहाँ से उठा लिया, और W0 यहाँ से, W0 इंटू सो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 0.4 के आसपास. राइट. ओके. एंड इसका लेना है तो ये होगा DA into x0. हाँ, एग्जैक्टली. So this we can write it as it's equal to DA यहाँ से उठा लिया, x0 यहाँ से. ठीक है, ये आ गया -0.2. ठीक है. करेक्ट. 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 सिमिलरली इसको
कैलकुलेट करने के लिए वी नीड dx1 is db चाहिए मल्टीप्लाइड बाय w1. Right. So this is db यहाँ से उठा लिया w1 यहाँ से it's almost 0.6 negative. ओके आई थिंक गलत फिल कर दिया. Similarly, this guy Right. dw1 is equal to db again multiplied by x1. This is almost 0.4. Okay. Right. Right. Okay. ठीक है. Correct. So after this iteration, do we need to go back again for forward iteration, or we can stop here अभी now? अभी 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 सोचो. दिस इज ये फर्स्ट सैंपल के लिए हुआ है ना. Okay. Okay. ये एक सैंपल दिया था तुम्हें इनपुट Okay. उसके लिए इतना सब महाभारत हुआ. Correct. Correct. अभी ये जो डेल्टाज है जो रेड बॉक्सेस है उनको तुम्हें जब तक एपॉक कंप्लीट नहीं होता यानी 10 सैंपल है समझो एक एपॉक में तब तक तुम वेट को अपग्रेड नहीं करना. वो रेड बॉक्सेस को प्रिजर्व करना उनको इंक्रीमेंट करते रहना यानी एक्यूमुलेट करते रहना. Like a list or like a queue kind of thing, stack kind of thing. नो एक्यूमुलेट. एरर इट्स एक्यूमुलेट. एरर को accumulate करना है. हाँ, एरर को accumulate मतलब एक्यूमुलेट करना है हर एक Okay. सैंपल के लिए. हाँ, मतलब वैल्यू स्टोर करेंगे, लिस्ट में स्टोर करेंगे, कहीं पे स्टोर करेंगे वैल्यूज को. Okay. लिस्ट में स्टोर कर लिया तो चलेगा लेकिन उतना स्पेस नहीं चाहिए तुम्हें एक्यूमुलेट करना है. तो how to यानी accumulate? फर्स्ट सैंपल के लिए 0.4 आया तुम्हें ये वैल्यू. हाँ. सेकंड सैंपल के लिए समझो 0.8 आता है तो 0.4 प्लस Okay. 0.8 Addition, simple addition. हाँ एडिशन हाँ एक्यूमुलेट करना है. अच्छा एक क्वेश्चन है इधर. हाँ. ये क्या वेट का वैल्यू या वेट का डिफरेंस जो आ रहा है मतलब नहीं देखो मैं वही बोला तुम्हें. हर एक क्या बोलते हैं वो डेल्टास तुम्हें मिलेंगे. ये तुम्हारा इनपुट है Okay. तो इसका डेल्टा तुम्हें स्टोर नहीं करना क्योंकि वो वेट नहीं है. Okay. इसका डेल्टा स्टोर करना क्योंकि ये वेट है. तुम्हें वेट पता का है ये वेट है. यस Right. यस हाँ, वेट का मिलकर मतलब जस्ट मुझे और एक बार पहला एक वेट था सपोज 1. ओके नाउ वेट नहीं आया सपोज मत करो. यहाँ पे दिया हुआ है पहला वेट क्या वैल्यू है. पहला वेट हाँ 2 2 है. राइट 2 है. अभी का वेट आया क्या 0.6. Point minus वो 5. negative DW0 is 0.2 negative. 0.2 negative 0.2 मतलब 2 minus 0.2. अभी नहीं Negative करना 0.2. उसको. अभी नहीं करना एक्यूमुलेट यानी अभी वो वेट नहीं चेंज करना है. तुम्हें पूरा पहले डेटा से यही वेट के साथ एग्जॉस्ट करना है. पूरा फॉरवर्ड जाना है बैकवर्ड आना है.
हाँ 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 और फिर ये रेड बॉक्स में एक्यूमुलेट करते हो तुम्हारा जितना भी सैंपल्स का डेल्टाज आएगा, हाँ है ना, वो रेड बॉक्स में एक्यूमुलेट होते रहेगा वो। हाँ 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 ओके, ये तो एंड एंड है एंड ऑफ द approximation। एपॉक वो जो W0 और डेल्टा ऐड होके W0 अपडेट हो जाएगा। ओके ओके, तो इसका मतलब यू मीन टू से नेक्स्ट सैंपल जब आएगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सैंपल, तो नेक्स्ट सैंपल के लिए x0 x1 will change, but w0 and w2 w0 and w1 will remain same, means 2 and minus 3. W0, W1, W2, all the parameters will remain same, only the Okay, input changes. right, You go forward pass again, and we'll get right? different delta, Come we'll get backward. Another delta will come. You correct, accumulate that delta in this red box. okay जो okay भी okay है ना? ये वाले रेड बॉक्स में accumulate करते रहो, ये वाले okay और ये वाले okay और ये वाले, ये हाँ DW2 वाले में DW0, DW1, DW2 में accumulate करते हो वो डेल्टास एंड एंड ऑफ द एपॉक, यानी okay, सब सैंपल तुम्हारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हाँ तभी तुम वेट अपडेट कर देना, यानी okay वेट W0 को अपडेट कर देना। दैट okay इज योर वन एपॉक। वैसे तुम्हारे कितने एपॉक्स दिए हैं वैसे वो लर्न करते जाएगा चीजें। okay okay fine, हाँ it makes sense. ठीक Now actually Suman bhai, it is also indicating to your our basic fundamental query that it is impacting two inputs, but we are ignoring that impact. yes Okay, yes yes right, it's we are yeah yeah it will, while back propagation it is just an equation, it will impact all values, but we will be considering only the weight factors, and we will be ignoring other parameters. आई yeah मीन yeah इनपुट का तुम्हें डेल्टा चाहिए नहीं, सो correct, आई मीन that was the सो point. इनपुट है जो इनपुट लोगों ने दिया जैसे मेरा इमेज आ रहा है मैं तो हाँ, आई कैन नॉट चेंज माय you इमेज cannot change, you cannot change, आई yes, कैन ओनली चेंज ऑल द अदर फैक्टर parameters, only get correct parameters resisted have to be changed. Yes. correct correct yes correct yes right so that's why input will be fixed always right only the decision or output or all the other parameters all the other things can be changed okay right हम्म and हम्म हम्म just a query, यहाँ पे जो bias होगा, bias के लिए हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, right? Bias will be always fixed. Bias is also a parameter, it has to be changed. I mean, bias also will be derivative Okay. if there is a bias अगर bias will bias कोई यानी इस केस में अगर ये bias था, right? हम्म Not this case. कौन सा था ये? F1 maybe ये F1 W2 है W2 शायद bias ही है add case वाला रुको। Yeah, ये W2 is ये bias. image में W2 is देखेंगे bias. Yes. हाँ W2 is bias और अगर ये वाला केस था, ये वाला DF अगर कांस्टेंट ना होके पैरामीटर होता, हम्म इन दिस केस ये जो वन ऐड करते हो ना, तो correct ये अगर वन ना होके कोई पैरामीटर होता, correct B0 B1 something any हाँ input, P0 someone, correct right? तो वो उसका update डेल्टा होता, तुम्हें स्टोर करना पड़ता। correct. तो अभी क्योंकि 1 है, it is a constant, तो भले ही impact करेगा, but we need not to store that value, correct No, because I mean it's a constant, correct so correct we ignore that delta. absolutely fine. पर आपने जो बोला कि अपना जो पैरामीटर अपडेट होता है पूरा एपॉक होने के बाद, Right. और अगर हम हमारे असाइनमेंट से कंपेयर करें तो वो एक बैच साइज होने के बाद पैरामीटर अपडेट होता है ना, हाँ, क्योंकि so I mean ये stochastic हो गया तुम्हारा, I mean mini batch क्या Right. बोलते हो, stochastic हाँ, stochastic gradient mini batch, हाँ, हाँ right. mini batch Stochastic Yes, gradient yes. descent, हाँ ये SGT. gradient descent में epoch के बाद होता है, हाँ, mini batch gradient descent ये में मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में तुम्हारा मिनी बैच होने के बाद, correct और स्टोकेस्टिक में हर सैंपल पे अपडेट होता है। ओके right हाँ सागर भाई, तो हम लोग असाइनमेंट जो किए थे वो मिनी बैच, नॉर्मली सब लोग मिनी बैच करके ही किए थे, तो आफ्टर एवरी इपॉक में वैल्यू एक्यूमुलेट होगा एंड बैच कंप्लीट होने के बाद वो
फाइनल वेट अपडेट होगा. करेक्ट. नहीं, आई मीन अगर ग्रेडियंट डिसेंट है तो एपॉक कंप्लीशन के बाद ओके. हाँ. आ, अगर मिनी बैच वाला है तो एवरी मिनी बैच पे होगा. करेक्ट, हम यानी लोग वही जब बोल रहे हैं कि हाँ. असाइनमेंट में मोस्टली वी फॉलोड मिनी बैच. वी ओके. मोस्टली वी फॉलोड मिनी बैच. तो एवरी इपॉक में वैल्यू एक्यूमुलेट हो रहा है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैच इट इज अपडेटिंग द फाइनल वेट. राइट, राइट. एपॉक राइट. का टर्मिनोलॉजी समझो. एपॉक इज कंप्लीशन ऑफ all the samples. I mean, inference of all the samples has happened. हम्म. Back propagation has happened for each and every. I mean, the weight updation now has impact of each and every input sample, in each and every training input sample. करेक्ट. करेक्ट. Okay, that is your epoch. हम्म. मिनी बैचेस जो तुम पूरा ट्रेनिंग सेट को डिवाइड. लेट्स से 16 मिनी बैच में डिवाइड करोगे. करेक्ट. तो वो 16 का ही इम्पैक्ट एक अपडेट में जाएगा. करेक्ट. करेक्ट. जो करेक्ट. every 16 सैंपल द वेट विल गेट अपडेटेड. करेक्ट. है ना. और स्टोकेस्टिक में हर सैंपल के साथ वेट अपडेट हो जाता है. राइट. तो ओके, तो डेफिनेटली स्टोकास्टिक विल बी स्लोअर ऑन दैट केस. करेक्ट. या आई मीन सो ऐसा सोचो ना. यानी तुम एक ही यानी एक ही तुम्हारा पूरा नेटवर्क है बना हाँ. हुआ. हाँ. उस पे तुम 16 चीजें इंडिपेंडेंटली चला सकते हो अगर 16 का मिनी बैच चलाते हो तो. है ना. तो वो फास्ट चलेगा. देयर विल बी. अगर स्टोकेस्टिक है तो हर एक इमेज के साथ तुम्हें वेट अपडेट करके पूरा पैरामीटर्स अपडेट करके वो वापस वो सिक्वेंशियल हो जाएगा पूरा. लेकिन लेकिन उस कंडीशन में स्टोकास्टिक विल गिव फास्टर कन्वर्जेंस. नो, isn't it? नो, नो. इट Why डजंट not? हैपन दैट वे. नो. Because see आई mini मीन batch, see mini batch will lower. हर एक सैंपल के साथ तुम्हारा करेक्ट. वेट अपडेट हो रहा है. वेट अपडेट हो रहा है. सो करेक्ट. आई मीन it will I mean it will see it that way, right? I mean कि हर एक सैंपल पे वेट अपडेट हो रहा है तो I mean it will be very stochastic in the sense कहीं पे भी जा सकता है. I mean it won't be a balanced ओके. weight updation, right? I mean it will just do it for that particular sample. ओके. तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो तुम. Okay. See, mini batch will be faster if my resource has parallel computing capability. Assuming that fact, Yes. that independent epochs or independent iterations are moving in parallel, and Right. after certain iteration, we are adding up the values. Right. Okay. Right. या एसजीडी में क्या करते हैं? एसजीडी में पूरा एसजीडी में एक एक सैंपल के साथ अपडेट होता है. हाँ, एक एक सैंपल के साथ अपडेट होता है. लेकिन जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें पूरा पूरा बैच का हाँ, बैच जब तक साथ खत्म नहीं होता बैच calculate के करते एंड में अपडेट होगा वो वेट. मतलब बैच इक्वल्स 1. आप अगर मिनी बैच के साथ कंपेयर हाँ. करेंगे तो Ah. नॉर्मल जो जीडी है, ग्रेडियंट डिसेंट है, उसमें मिनी बैच साइज 1 है. तो हर सेट वो स्टोकेस्टिक के साथ बोले हो आप. हाँ. Correct. Correct. I think it is a fine discussion, and Bipin bhai, thank you very much. I think this वेलकम गाइस. no, this initiative we are taking, and gradually people will come. We expect people will come. We don't know. No, I think एटलीस्ट आई मीन कुछ लोगों को फायदा हुआ तो भी अच्छा ही है. Exactly, exactly, exactly. That is the thing. इट्स गुडफुल. आई मीन Right. एटलीस्ट मैं तो ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट इफ वी डू दिस टाइप ऑफ सेशंस, what happened, first of all we discuss, right? In usually in college or something, if we are there, we usually discuss different things. We discuss other things also. At the same time we discuss about study stuff also. But in WhatsApp we usually discuss about like regular other stuff, but we don't discuss that much of study. It's very hard to do also in there as a intense way. But if we do peer study like this, at least we choose a topic and then we go with that and then we discuss, and there are many things comes out
because first of all, I can tell you it's a both way. Like who is giving the session, like you or someone, they will be benefited the way, because there will be a lot of other questions will be coming, right? Like they will ask something. So that means you have to answer. Before that, you have to you feel little bit of pressurized because you have to build some kind of preparation, right? So it Right. will give you also extra boost to study, force you to study, Correct. as well as who is listening like us. It helps because we are asking different question without any fear, without anything like, oh no, I am not going to tell, it's already covered, all those stuff. Correct. So we हाँ can यार, वो प्रेशर बहुत होता है, यानी वो प्रोफेसर को कुछ पूछ भी नहीं सकते यार, यानी यू हाँ, कैन डिबेट exactly, exactly. व्हेन दे तो जस्ट नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा मन में डर लगता है, शायद कुछ बोल देगा, शायद ये नहीं ऑलरेडी नहीं कवर हो बोल चुका देगा, है. एंड दे डोंट वांट टू डिबेट, आई Right. थिंक दे जस्ट वांट टू फोर्स थिंग्स ऑन And अस. another thing also, we can actually stick with this one unless we are completely clear. Yes. But obviously, I can understand professor has their own Period, best. completion time and all those things. They have to cover different topics. But if we do the PR study, this is definitely help. At least I can tell you that I'm getting lot of help from here, like just doing the PR study, Right. and it covers many stuff, it clears and it gives confidence first of all. Mm-hmm. Yes, Shubhar bhai, I think you did excellent, and your this two session or this DRL also will be extracting more. Don't worry, we'll not leave you. And Bipin bhai No, also no, we are that's starting. fine. That's fine. Right. I can take anytime those sessions. Those sessions are actually, I can tell you, Yes. by giving those session Yes. on my own, like I got a lot of confidence. I understand. Same thing. Same thing for me. I also realize the same thing. Yes. 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 So Absolutely. so definitely this is not a waste of time from both sides, who is giving the session and who is listening, because it's actually helps a lot. Correct. 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 ये वाला है ना वेबिनार हाँ, वाला. ये वाला है, मैंने ये देखा है, इसमें वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर जो आपने दिखाया था अभी, वो नहीं है. एक मिनट देख लेते हैं. वो शायद आपने दूसरा किसी जगह से या वो वीडियो से नहीं आपको शायद नहीं दिया. वीडियो से लिया था उसने, कौन से इसमें से स्लाइड से दिया, देख लेते हैं. हाँ, तो वीडियो मुझे देखना पड़ेगा, मैं वेबिनार और एक बार चेक कर लूंगा. मैं देखा नहीं, लेकिन इस स्लाइड में वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरे टाइप का है, लेकिन सेम सेम क्वेश्चन नहीं है. एक मिनट देख लेते हैं. ये सिंपल सा है, प्लस माइनस एक मिनट है, मल्टीप्लिकेशन. है नीचे है. आई एम श्योर फॉर दिस, दिस इज ओनली स्लाइड. This is the same question. Yeah. Yeah. Same type of questions. No, it's actually same question. Yeah, it's the same Even question. same time, it's the same question, just step by step, where it's explaining the chain rule and other things. All the No. steps, one after another, actually, that we are doing in Excel. So it's basically like that. Is it the same question? No, एक it's not same एक question. मिनट. It's a simple Same one. It's type. just class. Right. Right. Similar type of question. Correct. Correct. Yeah. It's a computational graph, and then from there you do the back propagation. Correct. Correct. That's correct. एक मिनट. So वो स्क्रीनशॉट किससे लिया ओके, था? मैं निकल रहा था. थैंक्स बिपिन भाई फॉर द सेशन. हाँ हाँ हाँ. आपको ये समझ में आ गया था क्या? I wanted to discuss the second problem also, but I mean you guys are, ये समझ में आ गया था ना? Oh yeah. हाँ, ये मैं एक्चुअली मैं किया हूँ. ये जस्ट कुछ नहीं, ये मैट्रिक्स का I mean it's the same मल्टीप्लिकेशन. thing, same chain rule है. हाँ And back propagate करता है, इधर भी 1 लेके we just back propagate it.
एंड देयर इज अ L2 का ये दिया है ना L2 हाँ नीचे है, L2 रेगुलराइजेशन का नीचे है, ये है एक, यही है L2 राइट राइट रेगुलराइजेशन। राइट 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 हाँ तो यही है ये हाँ हाँ, डिस्कस करना था ये सिंपल, ये सेम चीज है, इंस्टेड ऑफ सम नंबर स्केलर वैल्यू इट्स जस्ट अ एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई मीन यहाँ पे ये मेन है कि तुम्हारा जो सेकंड इनपुट है उसका जो तुम ये डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हो आई मीन ये जो इसका डेल्टा जो निकलेगा एक्स का यू हैव टू हाँ ट्रांसपोज द मैट्रिक्स yes फॉर yes 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 because otherwise your matrix multiplication will yes not match, right? because So that's yes why you have to otherwise do it. it's same as the scalar same Yeah yeah, fundamentals है just you हाँ have हाँ, to take care of वही that एक ट्रिक है, हाँ वही एक ट्रिक है। right right ये जो Q कैलकुलेट किया है Q नहीं क्या है ये स्टेप है, हाँ क्यू तो हाँ हाँ मल्टीप्लिकेशन है, X डॉट प्रोडक्ट है, तो राइट इसीलिए राइट वो ट्रांसपोज करके ले लिया। श्योर श्योर वही वही एक ट्रिक है ये वाला 2Q हाँ बाय XT ये नहीं सॉरी नहीं Q नहीं, यहाँ बाय पे जो क्यू का वैल्यू किया w डॉट एक्स, वही वही किया। W डॉट X नहीं आई मीन Q इज W डॉट X है वो हाँ फॉरवर्ड क्यू पाथ इज है w डॉट एक्स, वो जो ग्राफ में है। डेल्टा डेल्टा W कैलकुलेट नहीं डेल्टा X कैलकुलेट होते समय नहीं व्हाट इज द इक्वेशन W इंटू एक्स ना हाँ डेल्टा एक्स कैलकुलेट होते समय हाँ ये ट्रांसपोज लिए है यहाँ पे राइट हाँ डब्ल्यू हाँ, डब्ल्यू वो ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट ग्रेडियंट में जब कर रहा है वो राइट राइट डेल्टा करता है। हाँ W के समय नहीं लेना आप है डेल्टा W बट डेल्टा एक्स अच्छा है के टाइम तो खा लो, ट्रांसपोज ले लेना हाँ हाँ तो हाँ, खा लेना। ये जस्ट जस्ट क्या है कि आप यूं ही कर सकते थे, लेकिन आपका वो आंसर नहीं आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल फेल if you राइट don't do transpose. करेक्ट, दैट्स करेक्ट, इट इज That's the बेसिकली राइट, इट इज बेसिकली डायमेंशन नहीं मैचिंग पर्पस। एक्चुअली yes. नहीं होगा फेल क्योंकि मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंगल वैल्यू आ जाएगा ना नहीं आई मीन यहाँ पे 2/2 केस है इसीलिए फेल नहीं हो जाएगा आई मीन करेक्ट, इट इज 2/2 है तो फेल नहीं होगा, दैट इज आल्सो करेक्ट। हाँ इट इज हाँ 2 हाँ 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 2/1 है या 4/3 काइंड ऑफ होता तो फेल हो जाता है। हाँ तो फेल हो हाँ जाएगा हाँ 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 हाँ। लेकिन लेकिन अच्छा है, एटलीस्ट ये कवर हो गया थोड़ा। मुझे राइट, देखना था ये कैलकुलेशन, बैक प्रोपगेशन में अभी तक किया नहीं हूँ, एटलीस्ट ये एक रिफ्रेशर बन जाएगा। L1 L2 regularization तो सिंपल ही है आई मीन it's not that complicated so regularization के लिए what do you suggest to follow this Wavener and these problem statements or there are मैं something else? आपको एक नहीं नहीं रुको where do I post the link बहुत अच्छी तरह से समझाया उसने L1 L2 विपिन भाई, regularization विपिन भाई, हाँ आप कोई टेक्स्ट फाइल या एक्सेल फाइल मेंटेन कर रहे हो? इफ यू कैन शेयर वी कैन मेक दैट नहीं यार रिपोजिटरी। मैं बहुत मेंटेनेंस में बहुत घटिया हूँ यानी मेरे से तो नहीं होता वो सब ओके, नो इशू नो इशू। आई मीन अब मैं हैंडराइटिंग भी देखोगे तो पागल हो जाओगे so सबका है, सबका ही ऐसा है। एक मिनट में एक YouTube वीडियो दे रहा हूँ आपको उसमें L1 L2 रेगुलराइजेशन उसने बहुत ही अच्छी तरह से किया है अच्छा, लेट आप मी सी नो नॉट दिस वन मैं भेजता हूँ आपको चैट बॉक्स से में या पर्सनल डीएम करके आप भेज दो तो हम लोग ऐड कर लेंगे उसमें। कौन कौन है यानी किसको चाहिए ये चैट बॉक्स में डू डाल यू हैव अ ग्रुप फॉर दिस वर्किंग we नहीं we we have this common big group। ठीक है मैं उसी पे भेज दूंगा दोज हु हाँ हाँ, आर करेक्ट, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो न्यू वाला ग्रुप की पुराना वाला ग्रुप है ये अपना न्यू न्यू ये न्यू ग्रुप दोनों में DNN ही वाले हम। DNN वाला ग्रुप है ना अपना ना हाँ डीएनएन। डीएनएन वाला ग्रुप में भी मैं हूँ, तो हाँ हाँ उसमें भी आप भेज सकते हाँ हाँ, मैं DNN वाले पे भेजता हूँ फिर मैं ठीक है ठीक है। ढूंढना पड़ेगा वो मैं भेजता हूँ आपको तो उसमें L1 L2 अगर वो देख लिए तो L1 L2 क्लियर हो जाएगा आपका पूरा
Correct. regularization वो और एक्सऑर नैंड गेट एंड गेट वो सब तो यानी आपके इसने अच्छा कवर कर लिया है प्रोफेसर ने। हाँ और क्या बचा फिर? और है लास्ट लास्ट में ऑप्टिमाइजेशन है, वो अभी मैं देखा भी नहीं। वो इसका देख लो आप एंड्रयू एनजी का उसने हाँ यहाँ पे अगर डाल दोगे एंड्रयू एनजी का पूरा सीरीज देख लो एक बार तो वो हो जाएगा ये वाला। इसने हाँ बहुत अच्छे से समझा A दिया है। monolithic architecture was used extensively in the early 2000s, but microservices is During the history of So this lectures are good enough for all the optimizers. हाँ ये इसका अच्छा है। जो ये मैं सीरीज है वो देख लो एक बार लर्निंग रेट डीके वो सब कुछ ही आ जाएगा उसमें कुछ बचेगा नहीं। ओके ओके ठीक है इसका भी हाँ ऑप्टिमाइज एंड्रो एनजी का इफ यू कैन शेयर दिस गूगल यूट्यूब लिंक दैट आल्सो विल बी ग्रेट अदरवाइज मैनुअली यू कैन सर्च आई मीन यही देख लो एंड्रयू एनजी का फेस आ गया या नहीं आ गया बस। करेक्ट 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 गॉड है बंदा। हाँ 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 राइट 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 दर्शन हो गया या नहीं आ गया सब कुछ आपको। करेक्ट करेक्ट और तो कुछ बचा नहीं ना फिर टॉपिक मैंने नहीं बस यही और तो राइट फाइन थैंक यू विपिन भाई अगर थैंक यू in between if we organize something very specific or anything we'll inform you as well in the group so anyone we can participate as we like okay श्योर आई मीन अभी तो 2-3 दिन है और correct that is the thing so लेकिन if क्या क्या बात है कि आफ्टर द